Assalamu alaikum everyone. Hope you had a nice networking session. Hope you had a nice little break from all the AI talks that we've been having. आप में से कितने लोग Flutter developers हैं और how many of you know what Flutter is? Okay, nice. All right. And how many of you are aware of Firebase? Okay. All right. How many of you are looking forward to this talk after hearing like 3 to 4 AI ki talks? Okay. Firstly, those talks were very good, but need a little break from AI, right? Okay. So, for those of you who don't know me, my name is Sakina Abbas. I am the co-founder and CEO of Reactory, which is a software house based in Karachi. So yes, I flew in from Karachi to meet you all and interact with you all. I'm also a Google developer expert for Flutter and Dart, and alongside that, I'm also part of various Google communities and programs that are going on. So yeah, okay. तो जब हम गेम्स की बात करते हैं, okay, how many of you like playing video games? Okay, and how many of you are interested in building your own video games? Okay, awesome. So just like you, I also love playing games a lot. I grew up with an older brother, so obviously मेरे सारे लड़कों वाले शौक हैं. तो naturally when I was playing games, so I was interested कि यार Flutter development काफ़ी हद तक आती है. चलो let's try and explore कि क्या उसकी capability है. So the first game that I made is the one on the left, which is a bubble popping game. And इसमें कोई मैंने state management as such use नहीं की थी. Normal set state के through एक game बनाई थी और उसका था ये कि it has infinite levels और वो dynamic levels generate होते जाएंगे, ठीक है. तो point was this कि that was a proof of concept for me कि ठीक है Flutter के अंदर आप basic indie games बना सकते हैं. Then the one in between that you see with the Pokeballs, that was built using Flame. So how many of you know what Flame is? Okay, very few. I love that because that means a lot of you will be learning something new today. तो Flame एक गेम डेवलपमेंट इंजन है, ठीक है. अगर आप लोगों ने यूनिटी के बारे में सुना हो तो Flame is kind of something like that but for Flutter developers. तो ये एक गेम थी जो मुश्किल से आधे घंटे के अंदर बन गई थी by using Flame and Flutter. Then the one on the extreme right is another game that I built, which is a neon cat and it's eating donuts. And again, this is not built using Flame, Bonfire, any third-party library. ये custom मतलब Flutter के अपने code से बनी हुई है. तो the point is this to let you know कि अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो यू विल नो कि फ्लटर के अंदर लिटरली कुछ भी पॉसिबल है. इट्स अ ब्लैंक कैनवस, इट्स अ ब्लैंक स्लेट. आपको एप्लीकेशन बनानी है बनाओ, आपको गेम बनानी है बनाओ, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट. तो हैविंग सेड दैट, व्हाई नॉट लेट्स प्ले अ गेम. ओके, तो बेसिकली ये गेम वही है जिसको आज हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे. इट्स बिल्ट विथ फ्लटर यूजिंग बॉनफायर. आई गो इनटू व्हाट दैट इज़ इन अ व्हाइल. एंड इट्स यूजिंग फायरबेस. तो यहाँ पर सिर्फ एक मसला है कि जो लैपटॉप वाला QR कोड है वो सिर्फ वही लोग यूज़ करें जिनके पास लैपटॉप है, बिकॉज फॉर सम रीज़न जो द लेफ्ट वन विच इज़ बेसिकली URL, तो आप एक वेब ब्राउज़र के अंदर खेल रहे होंगे. फॉर सम रीज़न मोबाइल के अंदर इट्स नॉट वर्किंग प्रिटी वेल. तो इफ़ यू हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, यूज़ द राइट code, and if you have a laptop then use the left QR code, and let me know once you're in and then we can play it together. Does anyone else need to scan the QR code? Okay. तो इससे आपको आज ये भी पता चल जाएगा कि ठीक है एक गेम बनी हुई है जो कि एंड्रॉयड के साथ भी कंपैटिबल है, वेब के साथ भी कंपैटिबल है, iOS के साथ भी कंपैटिबल है, बट देन स्क्रीन के अंदर और ज़्यादा QR कोड्स फिट करने की जगह नहीं थी, सो आई जस्ट लेफ्ट इट विद 2. Are we still scanning the QR code? Yes? No? Yes, okay.
Okay, cool. So this is the game over here. It's called Dash Tales. Dash Tales का concept ये है कि your player is a dash, जो कि मतलब उर्दू वाला dash नहीं है, mascot है for Flutter, ठीक है. So what you have to do is this कि यहाँ बीच में आपको एक विज़र्ड नज़र आएंगे जो आपको बताएंगे कि बेटा इस तरह से गेम खेलनी है. एंड देन आगे जाके कुछ कलेक्टिबल्स आते हैं दैट यू नीड टू कलेक्ट, ठीक है. तो हमारे पास एक डॉट का कलेक्टिबल होगा, एक गूगल मैप्स का होगा, एक फायरबेस का होगा. एंड वंस यू हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ देम तो यू विन द गेम, राइट. इसमें एक और आएगा, वो एक UI ओवरफ्लो भी आएगा. तो अगर डैश उसके अंदर क्रॉस कर लेगा तो डैश विल डाई. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस गेम इज़ दिस कि ऑल दीज dashes that you see over here, they're all other players that are actually in this game. And इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल एंड बेसिक रखा गया है ताकि आपको बताया जा सके कि मल्टीप्लेयर की हैंडलिंग किस तरह से होती है, ठीक है. तो कोई एस्थेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था. सो इफ़ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आई एम गोइंग ओवर हियर एंड ओके. सो over here is my first collectible, which is a dart collectible. And if you are following along with me, you will see that if I eat this collectible right now, वो आप लोगों की interface से भी गायब हो जाएगा. Which means that the state is synchronized throughout all the devices because they're all sharing the same database. Then next we will go down, further down. So this is the overflow that I was talking about. I'm going to avoid that because I don't want to start over. Oh, we have another player just standing around here. And this is how you basically win the game. This link is publicly available, so you can feel free to play it out later after the session or when you go home. So this is the game that I built with Flutter using Bonfire and Firebase for real-time multipliers. So let's get into it. What are we going to learn in today's session? So essentially what we have is Bonfire, and then we have Firebase, and then when you put it together, you get a fun game with real-time multiplayer capability. So building on that, what will you learn today? You will see कि games अगर आपको बनानी होती हैं तो उसके क्या essential building blocks होते हैं that you need to focus on. Then we will do a little bit of introduction to what Bonfire is and how you can use that to build your own games. Then the third thing that we'll be looking at is मल्टीप्लेयर फंक्शनैलिटी किस तरह से आप अपनी गेम के अंदर डाल सकते हैं यूजिंग फायरबेस. देन वील पुट ऑल द पीसेस टुगेदर. वील सी कि अच्छा ठीक है, फायरबेस इज़ अप एंड रनिंग और गेम इज़ देयर, हाउ टू कनेक्ट द टू, किस तरह से स्टेट्स को सिंक्रोनाइज रखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देन वील evaluate कि भाई अगर गेम बनानी है तो why Flutter या why Firebase है. And then finally you'll be able to create your own game. And just by the way, the code is already up on my GitHub repo, so feel free to clone it out later and experiment with it. अगर हम building blocks की बात करें तो okay, सबसे पहले what game is this? Sorry? Pokemon, yes. Okay. तो अगर हम किसी भी गेम की बात करें तो what are the general building blocks? Just shout it out. Sorry? Environment, okay. And? Assets, okay. And? What? Sprites, okay. And? Mechanics, okay. सही है, ठीक है. अगर मैं इन सारी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मैप, जिसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं, ठीक है. स्पेसिफिकली अभी मैं RPGs की बात कर रही हूँ. एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप अपनी कोई भी इंडी गेम बना लो या RPG बना लो, कैजुअल गेम बना लो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं मैप, जैसे काउंटर स्ट्राइक में मैप्स होते हैं, सही. Then we have the player, the main character that you're playing, and आप किस तरह से अपने world किस तरह से आप अपने environment के साथ interact कर रहे हो.
देन वी हैव एन NPC आर लाइक साइड कैरेक्टर्स जो आपको जिस तरह से इन दिस गेम यू सॉ द विजर्ड हु वाज स्टैंडिंग अहेड ऑफ यू, तो NPCs आर कैरेक्टर्स दैट यू कैन कैजुअली इंटरैक्ट विथ. देन यू हैव एनिमी. अच्छा, anyway, just by the way, did anyone get this joke? No? Okay. मैंने एनिमी हमारे पास यहाँ पर ऐसे थी नहीं, बट मैंने रिफ्लेक्शन को इसलिए हाईलाइट कर दिया बिकॉज यूर योर ओन वर्स्ट एनिमी, राइट? ओके. ओके, देन वी हैव ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर एक साइन बोर्ड हो गया, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, टॉर्चेस हो गई, जस्ट एनी ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन द मैप एंड दैट यू कैन collide with and that maybe you can interact with. तो हैविंग सीन ऑल दीज बेसिक कंपोनेंट्स, हम देख लेते हैं कि बॉनफायर एग्जैक्टली है क्या. बॉनफायर एक लाइब्रेरी समझ लो या फ्रेमवर्क समझ लो, एक फ्रेमवर्क है जो कि फ्लेम के ऊपर बनाया गया है एंड इट्स स्पेसिफिकली बिल्ट टू क्रिएट RPGs विच आर रोल प्लेइंग गेम्स लाइक पोकेमॉन, सही. इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लिटरली उनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे एंड जो उनका क्रिएटर है उसने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स भी जो है अपनी पब्लिकली अवेलेबल की हुई हैं, उनके डेमोज भी हैं, उनके गिटहब के ऊपर कोड सैम्पल्स भी हैं. तो यू कैन लिटरली जस्ट पिक एनी वन एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट टेम्पलेट. द डैश टेल्स गेम दैट वी जस्ट एक्सप्लोर्ड राइट नाउ, इट इज़ ऑल्सो बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ टेम्पलेट जो इन्हीं के एग्जाम्पल्स के अंदर मेंशन था. एंड जस्ट बाय द वे, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ये वाली गेम बनाने में अंदाज़न कितना टाइम लगा होगा? What? Louder? दो मिनट कौन है यार ये 2 मिनट? भाई ChatGPT से नहीं बनवाया, खुद बनाया. नहीं, ओके, नहीं इतना भी नहीं. We took roughly around like 3 to 4 hours, ठीक है, along with Firebase and the mechanics and everything else. So it really makes development easy and fast, and आप literally within minutes you can have your game up and running. Okay. तो अब हम देख लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी विल डू अ डीप डाइव कि हमने जो गेम बनाई है वो किस तरह से बनाई है. बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज इफ़ यू गो अहेड एंड इफ़ यू गो एंड गूगल राइट नाउ कि build a game with Flutter, so you'll get tons of articles, tons of tutorials, tons of matter for you to look into. लेकिन रियल टाइम के साथ अगर आप गूगल करोगे या मल्टीप्लेयर के साथ आप गूगल करोगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि व्हाट प्रिंसिपल्स विल अगर आप उन प्रिंसिपल्स या के बारे में अगर आप सोचेंगे तो हाउ विल दे हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग योर ओन गेम विथ रियल टाइम या मल्टीप्लेयर फंक्शनैलिटी. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस ऑथेंटिकेशन फॉर सेशन मैनेजमेंट. ऑब्वियसली अभी हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर गेम खेल रहे थे तो हर किसी का अपना अपना सेशन चल रहा था, ठीक है. तो उसके लिए इट्स गुड कि अगर आप ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लो. फायरबेस के अंदर बहुत सारे ऑथ प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, सो आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल. लेकिन फॉर दिस गेम स्पेसिफिकली आई यूज्ड द अनोनिमस लॉगिन क्योंकि आई जस्ट वांटेड गेस्ट लॉगिन. मैं कोई लीडर बोर्ड्स वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं करके रख रही थी, तो गेस्ट लॉगिन / अनोनिमस लॉगिन वर्क फाइन हियर. Then the next thing was एक यूज़र्स का कलेक्शन होना या प्लेयर्स का कलेक्शन होना, ठीक है, ताकि जो जो आपकी लॉबी को या जो जो आपकी गेम को ज्वाइन कर रहे हैं वो डेटाबेस में उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद हो, ठीक है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर गेम इज़, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आए, तो उसकी बेसिस पर आप अपने डेटाबेस में वो चीज़ें रखोगे. इन माई केस आई जस्ट हैड टू स्टोर द UID जो कि ऑथ से आ रही थी, द यूज़र नेम जो कि आप लोग शुरू में एंटर कर रहे थे, एंड देन पोजीशन X एंड पोजीशन Y. दिस इज़ लाइक द मोस्ट क्रिटिकल and the most crucial aspect of this entire thing, क्योंकि जो गेम में आपको डिफरेंट डैशेस नज़र आ रहे थे वो इसी तरह से आ रहे थे कि जो दूसरे प्लेयर्स या जो भी आपस में इधर उधर मूव कर रहे थे तो उनकी आपको लाइव पोजीशन ट्रैकिंग अपनी गेम में दिखे, ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है कि पीरियोडिकली लाइक जिस तरह से आपकी गेम चल रही है तो एज़ योर प्लेयर इज़ मूविंग या फिर जिस तरह से आपकी गेम चलती जा रही है you have to periodically update your players position in the database ताकि आप अपने पास से जब अपडेट करोगे तो दूसरे लोग फिर आपके प्लेयर को अपने environment पे या अपने मैप के ऊपर देख सकेंगे, ठीक है.
इसका सबसे हल्का एग्जांपल या सबसे आसान वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर हम लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के ऊपर बात करते हैं, सही जिस तरह से करीम ऊबर वगैरह में, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें द राइडर दे कीप सेंडिंग और अपडेटिंग देयर लोकेशन ऑन द डेटाबेस एंड द अदर पर्सन दे आर जस्ट फेचिंग दैट लोकेशन एंड दैट्स हाउ यू सी द मार्कर मूव ऑन योर एप्लीकेशन. तो एग्जैक्टली वही वाला सेम प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ हो रहा है. इफ़ यू कैन लुक एट द कोड ओवर हियर, अपडेट का एक मेथड है जो कि गेम कंट्रोलर की एक क्लास है जो कि बेसिकली इट्स द हार्ट ऑफ योर गेम. वहाँ पर आपकी सारी कंट्रोल, सारी फंक्शनैलिटी, किस पॉइंट पे किस कंपोनेंट को रेंडर करवाने, किस पॉइंट पर किसी कंपोनेंट को स्क्रीन से बाहर लेके जाने एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, तो समझ लें कि ये आपकी वो लाइफ साइकिल है विच इज़ अपडेट का मेथड चलता जा रहा है एंड उसके अंदर आपने एक इंटरवल लगा दिए 1 सेकेंड का कि अपडेट प्लेयर पोजीशन के नाम से. सो व्हाट इट विल डू इज़ दिस कि एवरी 1 सेकेंड आपका जो प्लेयर है वो उसकी पोजीशन उठाएगा एंड उसको फायरबेस के अंदर अपलोड कर देगा, अपडेट कर देगा. Then the next thing is get players live locations via stream subscription. तो आपने जो है एक स्ट्रीम लगा दी अपने फायर स्टोर के कलेक्शन के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर. जैसे जैसे फायरबेस पे चेंजेस आते रहेंगे यू विल कीप ऑन फेचिंग दैम एंड देन यू विल कीप ऑन अपडेटिंग दैट प्लेयर्स पोजीशन इन विद इन योर ओन लोकल गेम. तो over here what we're doing is this कि this is the bonfire widget. So when you're building any Flutter application, you know how you start off with wrapping your entire application with a material widget जहाँ पर आप अपनी configurations, route management वगैरह सब कुछ रखते हैं. Similarly, whenever you're working with Bonfire and you're building games, तो over here you have to wrap your widget with a Bonfire widget and then वहाँ आप अपना player provide करते हो, आप components provide करते हो, आप objects provide करते हो, decoration provide करते हो, map provide करते हो, controls provide करते हो, etc. etc. तो ये आपको एक कॉल बैक देता है ऑन रेडी का. ऑन रेडी का मतलब ये होता है कि आपका इंटरफेस अब रेडी हो चुका है, अब इसके साथ आपने जो भी करना है वो आप कर लो. तो इसके अंदर हमने एक मेथड कॉल करा दी विच इज़ सब्सक्राइब टू प्लेयर स्ट्रीम. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर वेल अवेयर ऑफ फायरबेस, तो ये कुछ भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट पुटिंग द पीसेस टुगेदर. आपने एक स्ट्रीम बनाई, ठीक है, एंड उसका यू आर जस्ट लिसनिंग टू योर प्लेयर्स एंड जैसे जैसे वो स्ट्रीम अपडेट होती जाएगी तो यहाँ पर व्हाट यू आर डूइंग इज़ दिस के फर्स्ट आप फाइंड कर रहे हो कि जो आपके पास मैप में कौन कौन से डैश के कंपोनेंट्स अभी एक्टिव हैं. फिर आप चेक कर रहे हो कि इस कंपोनेंट के अंदर क्या आने वाले प्लेयर की मतलब जो आने वाला प्लेयर जो मुझे फायरबेस ने रिटर्न किया है, क्या उसकी यूआईडी का कंपोनेंट मेरे सीन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है सो यू जस्ट एड इट टू योर इंटरफेस, बट इफ़ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट यू जस्ट गो अहेड एंड अपडेट देयर पोजीशन. दैट्स एज सिंपल एज दैट. तो literally this is how you're putting things together. This is how you're using Firebase to incorporate real-time multiplayer functionality in your game. तो अब हम इसको थोड़ा सा इवेल्यूएट कर लेते हैं, बिकॉज आप जब भी कोई भी फ्रेमवर्क सीख रहे होते हो या आप जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स यूज़ केसेस एंड इट्स लिमिटेशंस, ताकि यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन के वेदर यू वांट टू वर्क विद इट और नॉट. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लटर एंड फायरबेस आप कब यूज़ करना चाहिए फॉर गेम्स. Flutter offers you simple and fast state management. It offers you a blank canvas. तो आप literally you have control of every single pixel on the screen. तो आपको जिस component को उठा के जहाँ डालना है आप कर सकते हो. It's very highly customizable. Then it also gives you a very lightweight game, so you don't have to worry about it being bulky in size, etc. It's very performant and it's very quick to create. Like literally ये पूरी game पूरे like 3-4 घंटों के अंदर अंदर बन गई थी, and I'm sure कि अगर आप भी बनाने जाओगे तो इतने टाइम में आराम से बन जाएगा. It's very developer friendly, and the best part is this: if you're a Flutter developer, then it just works for you, right? You don't have to learn Unity or any other engine for that matter. So this is where it's really good. But what if you don't want to use Firebase for whatever reason? आपको इसका database नहीं अच्छा लग रहा, आपको इसका style अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके हमारे पास
on a broader spectrum, दो alternatives हैं. एक Supabase है, which is kind of like an alternative to Firebase, but it's not a NoSQL database. वो एक दूसरे database के ऊपर built हुआ है. And then the last thing is WebSockets. तो अच्छा, just by the way, Firebase भी under the hood WebSockets ही use कर रहा होता है. That's how you get streams, right? तो WebSockets is something कि अगर आपको अपना custom backend use करना है, custom database use करना है, so you can go ahead with socket programming. And that's about it. I don't know if we have time for questions. Do we? Yeah? Okay. Are there any questions? Yeah. Thank you so much. Your talk on Flutter, building games with Flutter was amazing, and I enjoyed and learned a lot. So my question is that how much Flutter supports building games? Like, can we build a high application just like PUBG and all kind of this? Okay. In the recent months, काफ़ी इस चीज़ के ऊपर मैंने development होती हुई देखी है that people are building crazy things out there. तो Flame के साथ if you go ahead and explore, as of right now, Flame is good in support for indie games, for casual games. जैसे आपके पास Sonic की game हो गई या Mario की game हो गई या Pokemon की game हो गई, तो उसके अंदर तो I'm giving you a vetted answer कि yes, go ahead. But for high performing games like PUBG हो गया या Dota हो गया, stuff like that, उसके लिए I wouldn't say कि बहुत ज़्यादा भी support मौजूद है, but people are working on it. The other thing, although that is available out there, is कि Unity के कुछ packages available हैं कि अगर आप अपनी Unity के ऊपर game बनाते हो and आपको उसके components अपनी Flutter की किसी game में use करने हैं या आपको उसका कोई part Flutter की game में use करना है, so you can do that. तो as of right now, ये वाला support, it's there. अगर एक कोई बंदा है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है और वो बिल्कुल स्टार्ट लेना चाहता है और वो फ्लटर और फायरबेस कितनी देर में कर सकता है और इसका रोड मैप क्या होगा? Okay. So initially it would be great if you have knowledge of object oriented programming, क्योंकि framework से पहले मैं ये कहूँगी कि the most important thing to learn is आपकी OOP and आपका data structures. अगर आपको ये दोनों चीज़ें बहुत solid, बहुत strong आती हैं, तो आप Flutter के आप कोई भी framework use कर सकते हो, ठीक है? Then other than that, the general framework that should be कि आपको UI बनाना आना चाहिए, so you should know कि what widgets are out there. क्योंकि अगर आप एक application बनाने जा रहे हो और आपके सामने Figma का कोई board खुला हुआ है, and you don't know कि इस चीज़ को मैं Flutter में कैसे बनाऊँगा, then that's generally the starting point, right? So I wouldn't say mastering the UI, but I would say कि एक widgets की एक basic building knowledge तो होनी चाहिए. Then after that, what you should know is कि या तो Firebase के साथ आपको काम करना आना चाहिए या फिर API integrations के साथ आपको काम करना आना चाहिए. And then the third thing is state management. You know, state management is something that connects all the pieces together. It persists your state ताकि आपको बार-बार API calls या ताकि आपको बार-बार data fetch ना करना पड़े. तो जनरल बिल्डिंग ब्लॉक्स में यही दो तीन चीज़ें आती हैं. उसके बाद फिर यही है कि इफ़ यू वांट फर्दर एक्सेल एट इट, तो फिर या तो आप बिहांस का कोई बोर्ड, मतलब बिहांस के ऊपर कोई डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले लो, या फिर आप कोई वो वाली एप्लीकेशन उठा लो जो कि आप कॉमनली खुद से काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, एंड यू स्टार्ट रेप्लिकेटिंग दैट, लाइक यू बिल्ड एग्जैक्टली अ क्लोन ऑफ दैट यूजिंग फ्लटर एंड फायरबेस और एनी योर ओन कस्टम बैकएंड. सो in short, you learn by doing, and you start learning small things, and then you go up. Thank you. Any more questions? Okay. Excuse me. Okay. I heard AI, हम लोग AI जो यूज़ करते हैं वो पाई गेम के अंदर यूज़ करते हैं पाइथन में, ठीक है? लाइक AI से इंटीग्रेट करना इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Sorry? हम लोग AI का यूज़ करते हैं पाइथन में यूजिंग Okay, पाई yeah. गेम. लाइक अगर आप Yeah, एग्जांपल yeah. लें टिक टैक टो जो गेम है, ठीक है, उसमें अगर हम इसमें बात करें तो इसमें AI की इंटीग्रेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू पाइथन.
नॉट रियली, क्योंकि Because हमें आप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, नो, लाइक एल्गोरिदम्स जो हैं हमारे पास. not really, क्योंकि you're not integrating any algorithms over here per se. What you're doing is कि आपके पास models तो already pre-trained पड़े हुए हैं ना, वो आपने TensorFlow में train करके रख लिया, कहीं भी आपने train करके रख लिया. तो at the end of the day you're just integrating that using a library in front end. तो उसकी कोई language की as such dependency आती नहीं है. हाँ, सवाल ये है कि there is an algorithm that you're willing to code yourself, मतलब उसकी कोई library आप मतलब प्री बिल्ड कोड आप उसका यूज़ नहीं करना चाह रही हो, फॉर सम रीज़न यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ, ऑब्वियसली यू वुड हैव टू कोड इट इन डार्ट एंड देन यूज़ इट ओवर हियर. बट जनरली इस तरह की प्रैक्टिस होती नहीं है, बिकॉज सेग्रीगेशन ऑफ लेयर्स इसी वजह से एग्जिस्ट करती हैं कि आपको जो है योर कंसर्न इज़ नॉट व्हाट्स हैपनिंग इन द ब्लैक बॉक्स, यू जस्ट हैव टू कंज्यूम इट एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो दैट्स हाउ इट जनरली गोज़. मैम, I think Hello. that's it. If there are any other questions, feel free to connect with me on LinkedIn, and I'm still around here, so feel free to get a hold of me, and I'd love to answer your question. Thank you.